Good morning everyone. So today we are going to learn about rhyming word. Okay. So what do you mean by rhyming word? Rhyming word means which sounds like same. Okay. Two different words which sound same. Rhyming word means words that sound same. Here you can write the word or two different words which sounds same. Okay. दो अलग वर्ड जो सुनने में पूरा सेम लगता हो उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड. एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे. क्या क्या सुनने में सेम लगता है? गो फ्रो. गो फ्रो है ना, सुनने में थोड़ा सेम लग रहा है पीछे का. और राइट फाइट. Okay, then same name, round bound, then you can write left theft. Then hell, heel, till. Then slow, flow, grow, fro. And you can also write there are very huge amount of examples for rhyming words which you can also find in a poem. आप poem में देखे होगे कि दो वर्ड, लास्ट के दो वर्ड सेम होते हैं. मतलब एक लाइन के लास्ट का वर्ड और लास्ट नीचे के लाइन के लास्ट का वर्ड दोनों सुनाई देने में सेम लगता है. जैसे कि राइट फाइट, नेम, सेम नेम, राउंड बाउंड, ऐसे वर्ड्स होते हैं. ओके. इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड. जो हमें सुनने में सेम लगता है उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.